हम लोग नेशनल इनकम में जो बचा हुआ मेथड था दैट वाज एक्सपेंडिचर मेथड, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इनकम मेथड। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर ले। इनकम मेथड में हम लोगों को 3 चीजें ऐड करनी थी। पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब हुआ कि आप एम्प्लॉइज को किस तरीके से रिवॉर्ड करते हैं फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये जो रिवॉर्ड होगा, ये रिवॉर्ड इन कैश भी हो सकता है और इन काइंड हो सकता है। काइंड कहने का मतलब कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज या बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को ऑफर करता है, जिसको मनी के टर्म्स में हम लोग मेजर कर सकते हैं। बहुत सारा एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो एक नॉन लेबर इनकम कैटेगरी में आता है और इसमें आप 4 चीजों को शामिल करेंगे: रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स और रॉयल्टी। ये 4 को जब आप ऐड करेंगे तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस होगा। मिक्स्ड इनकम है तीसरा। मिक्स्ड इनकम का मतलब इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स। इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, आप इसको मिक्स्ड इनकम की कैटेगरी में इसलिए रखते हैं क्योंकि सोर्सेस ऑफ इनकम को आइडेंटिफाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल सोर्स होता है इनकम को जनरेट करने का, एक से ज्यादा सोर्स होता है इनकम को जनरेट करने का, इसलिए इसको हम लोग मिक्स्ड इनकम की कैटेगरी में रखते हैं। अब आप जब इन तीनों को ऐड करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, तो क्या मिलेगा आपको? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। और फिर आप जब इसमें NFIA को ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा? नेशनल इनकम आएगा, NNPFC आएगा। आज हम लोग उसी मेथड, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर कुछ बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स को लिखेंगे और नेशनल इनकम का जो चैप्टर है उसको क्लोज कर देंगे हम लोग। एक्सपेंडिचर मेथड नाम से ही क्लियर है कि आप जब इनकम अर्न करेंगे तो इनकम अर्न आर मेंट फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग स्पेंट। यू अर्न इनकम because you want to spend it. There has to be some expenditure on the income that you have earned. अब देखिए, जब हम लोग डिमांड को डिफाइन करते हैं तो डिमांड का होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक्सपेंडिचर हो। डिमांड होने के लिए जरूरी क्या था? एक्सपेंडिचर। अब थोड़ा करना है, आप कौन से मेथड को की पढ़ाई कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो अगर आप एक इकोनॉमी के टोटल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करेंगे इकोनॉमी, और इस डिमांड को आप कुछ और नहीं कहते बल्कि आप इसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। तो अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। अगर आपने उस इकोनॉमी के एग्रीगेट डिमांड को भी निकाल लिया तो आप उस इकोनॉमी के नेशनल इनकम को निकाल चुके हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने समझा दिया, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर और डिमांड कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता, दोनों एक ही है। जितना आप एक्सपेंडिचर करेंगे उतना ही आपका डिमांड भी होगा। क्लियर है क्लास? ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जब इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है तो एक्सपेंडिचर कहां से आएगा? एक्सपेंडिचर 2 सेक्टर से आएगा। एक्सपेंडिचर कितना सेक्टर से आएगा? 2 सेक्टर से। कौन कौन सा सेक्टर, ये भी हम लोग आइए देख लें। पहला है एक प्राइवेट सेक्टर, दूसरा कौन सा सेक्टर? गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट से आएगा। तो आप जब एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर 2 सेक्टर से आएगा।
पहला प्राइवेट सेक्टर की ओर से एक्सपेंडिचर आएगा और दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर की ओर से एक्सपेंडिचर आएगा। यानी कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपेंडिचर जोड़ दें तो वो इकोनॉमी के एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। Am I clear? Yes, sir. ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है समस्या है। तो आपकी इकोनॉमी में जो एक्सपेंडिचर आएगा वो एक्सपेंडिचर दो सेक्टर से आएगा। पहला प्राइवेट सेक्टर, दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर। दोनों सेक्टर के एक्सपेंडिचर को आप जब जोड़ेंगे तो वो एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा और एग्रीगेट डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ते हैं। आखिर ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है इसका एक और नाम है, इसको हम लोग इनकम डिस्पोजिशन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम डिस्पोजिशन मेथड। डिस्पोज ऑफ करना, डिस्पोज ऑफ करने का मतलब हटा देना। तो आप जब इनकम को डिस्पोज करते हैं, इनकम को हटाते हैं, तो इनकम को हटाने का मतलब क्या हो गया? इनकम को खर्च करना। इनकम को क्या करना? खर्च करना। इसीलिए एक्सपेंडिचर मेथड का नाम इनकम डिस्पोजिशन मेथड भी है। क्लियर है क्लास? यस सर। ठीक। कॉपी निकालिए, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग। एक हेडिंग दे दीजिएगा एक्सपेंडिचर मेथड। Total expenditure in an economy is equal to the aggregate demand is equal to the aggregate demand, because demand will take place only when there is expenditure. Only when there is expenditure. Full stop. India being a mixed economy,
has an expenditure from two sectors, hyphen दे दीजिएगा, private sector and the government sector. The private sector and the government sector. Full stop. This implies that the summation of the expenditure of two sectors, will be equal to the total expenditure of the economy. Full stop. Expenditure of the economy. Full stop. The expenditure method is also known as income disposition method. क्या नाम है इसका दूसरा? Income disposition method. Full stop. पैराग्राफ चेंज करेंगे. Following are some of the important elements and steps involved in the estimation of national income by expenditure method. Hyphen दे दीजिए. Point number 1. Private final consumption expenditure. Point number 1 is private final consumption expenditure. Private final consumption expenditure. इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं PFCE, Private Final Consumption Expenditure, PFCE. It means the expenditure by the households on day-to-day necessities of life. Day-to-day necessities of
Like these expenditure provide immediate satisfaction. These expenditure provide immediate satisfaction. Full stop. For example, fooding. Lodging, 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 comma, conveyance, education, etc. Point number 2, government final consumption expenditure. Government final consumption expenditure. GFCE. The expenditure which is incurred, by the government on its day-to-day administrative activities and expenditure on providing utilities to the society, come under this category of expenditure. Full stop. For example, salaries to government employees, comma, office stationery, comma, subsidies, comma, pensions, scholarships, etc. Full stop. Point number 3, gross domestic
guys, we get calculating national income by expenditure method while calculating national income by expenditure method, comma, expenditure on intermediate goods will not be included. Full stop. It is because national income includes expenditure on फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर को ये कभी कंसिडर नहीं करता। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए इसको। वैल्यू ऑफ tangible fixed assets is called depreciation. Decline in the value of tangible fixed asset is called depreciation. कोई डाउट नहीं है क्लास? एक बार पढ़ लीजिएगा, उसका फिर पूछिएगा।